हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ट्रायंगुलर पल्स का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, देखो। सो ये तुम्हारा ट्रायंगुलर पल्स है। सी हियर, दिस इज योर एक्स टी। नाउ दिस पल्स is known as the triangular pulse. This is -1, this is 1, this is suppose 1. Now how to write down the equation? So I have told the notation of this triangular function. Triangular function you can write TRI T, or you may mention this triangular T in this way. Del T you can mention triangular T. So now what is this triangular T? Now this triangular T consists of actually two straight lines. This is one straight line, this is other straight line. So that means you have to write the equation for these two straight lines. Okay, in this range you have to write actually one equation, in this range you have to write other equation, because there are two different straight lines. This is one straight line, this is other straight line. The straight lines are different. If the straight line is same, then you have to consider one range or one equation you have to write. But here actually there are two straight lines. This is one straight line, this is other straight line. So accordingly you have to write down. See, so how to mention this triangular T, which you are saying xt. Actually in general you are taking this xt, which is known as the triangular function del T or triangular T. So mx plus c, this line equation you would write first. mx, m मतलब क्या है? y by x, change in y by change in x. So actually y by x 1 by 1, this is 1 into t, plus c मतलब क्या? y intercept. At what point this straight line touching to y axis? Y axis means this vertical axis 1, c is 1. Now when this straight line exists from this point to this point, that means you have to write the range. This is -1 to 0, -1 less than equal to t less than equal to 0. Again this is equal to, then this straight line equation you have to write mx plus c. m मतलब क्या? y by x 1 by 1, this is 1. But negative or positive, because you are falling. See here, I have discussed falling means negative slope, minus t plus 1. Then which range you have to write? 0 to 1, 0 less than equal to t less than equal to 1. So this is the equation of this triangular pulse. Now suppose you want to write down this equation in a mod t form. Then how to write down the equation in a mod t form? See here, this is very interesting, how to write in mod t form. Okay, so see here, so I may write the equation xt, which you are saying triangular t, mod t form. See here how to write in mod t form. This is minus. When you are writing in mod t form, see only the positive side. See only the positive side. Okay, this is the trick to memorize. See only the positive side. Now in the positive side, you may write actually this is falling. Falling means minus you can put. Then you just write a mod t. Then you just write mod t plus y intercept is what? 1. Now what is the range? Positive side. This mod t less than equal to 1. One say this straight line, one say this, now is equal to 0 when this mod t greater than equal to 1. 1 के बाद ये 0 है कि नहीं? तो that means see the positive side, only you just put the mod side over there, that's all. Now if you expand this, then definitely you will find this equation. See here how you are getting this equation. How you are getting this equation expanding this? You know the definition of mod t. Mod t is equal to minus t for t less than 0 is equal to t for t greater than 0. See here. Now if you put actually this definition here, then what will find? xt, which you are saying as the triangular pulse. This mod t is equal to minus t, minus plus, that means t plus 1. When mod t less than equal to 1, मतलब क्या है? minus t. You are putting minus t, the minus t less than equal to 1. What does it mean? That means minus t less than equal to 1. What does it mean? If you multiply minus sign, t greater than equal to minus 1. तो t greater than equal to minus 1, t already less than 0 ले चुके हो. ये डेफिनेशन मतलब t 0 से छोटा, minus 1 से बड़ा, विद इन रेंज. हो गया? That means you may write this is your t plus 1 for minus 1 less than equal to t less than equal to 0. करेक्ट? -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, 0 से छोटा तो है ही, बिकॉज t लेस देन 0 के लिए माइनस टी कंसीडर कर चुके हैं. अंडरस्टूड? नाउ सिमिलरली इफ यू पुट एक्चुअली दिस डेफिनेशन mod t is equal to t, so here you just put mod t is equal to t, मतलब minus t plus 1 mod t is equal to t, तो t less than equal to 1.
t 1 से छोटा, t तो 0 से बड़ा है ही, दैट मीन्स मैं राइट माइनस टी प्लस 1 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1, 0 से तो बड़ा है ही, ऑलरेडी ये पुट कर चुका हूं, t लेस देन टी ग्रेटर देन 0 के लिए पुट कर चुका हूं, तो 0 से 1 तक ये इक्वेशन हो गया, -1 से 0 तक ये इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है, 0 से 1 तक ये इक्वेशन, -1 से 0 तक ये इक्वेशन, मतलब ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। तो आइदर यू कैन राइट दिस डेफिनेशन और यू कैन राइट दिस डेफिनेशन फॉर दिस ट्रायंगुलर पॉल्स, अंडरस्टूड। तो हाउ टू राइट दिस इक्वेशन, हाउ टू मेमोराइज दिस, ओनली ऑब्जर्व राइट हैंड साइड, बस व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन राइट, ओनली पुट mod sign, that's all, only put mod sign, that's all. This is a minus t plus 1 लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए तो mod sign only you have to put, 0 greater than 1 के लिए, 0 greater than 1 के लिए mod sign you have to put, that's all. This is the way, this is the trick to write the triangular pulse equation in modulation in modular t form very easy, understood? Okay, now see, suppose you are having this equation, try to understand this is signal, then how to write down the equation in modular form, देखो very interesting, suppose you are having a signal in this manner, see here, this is -1 -2, this is 1 2, height is same, this height is 1 suppose, this is xt, see how to write it in modular form. So for writing in modular form only you just see the right hand side, because this is even signal, even signal, even signal, if even signal then how to write actually the modular form equation, see it is very interesting. So how to write xt is equal to कितना height है 1, ये height 1 है, but what is the range, right hand side you are observing 1 to 2, 1 less than equal to t less than equal to 2, but you have to put modular sign, but you have to put a modular sign, it is better, you have to put modular sign, understood, understood, okay good. Now is equal to 0 else, और बाकी जगह पे ये 0 है ना, 1 to 2 ये 1 हो गया, और राइट हैंड साइड पे बाकी जगह पे ये क्या हो गया 0, सो ये इक्वेशन बन गया। इसको अगर तुम देखोगे एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो mod t का डेफिनेशन डाल दो, mod t का डेफिनेशन अगर डालोगे xt इज इक्वल टू 1 1 लेस देन इक्वल टू -t लेस देन इक्वल टू 2 for t लेस देन 0, t लेस देन 0 के लिए है कि नहीं, सो मतलब ये जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एन मल्टीप्लाई करो तो -1 लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन नहीं रहेगा उल्टा हो जाएगा, माइनस एन मल्टीप्लाई करो से ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 से -1 तक, -2 से -1 तक t लेस देन 0 तो ऑलरेडी ले चुके दिस साइड में, ये क्या वैल्यू हो गया 1। अगेन अगर तुम ये डेफिनेशन पुट करोगे mod t इज इक्वल टू टी, तो इन व्हाट विल फाइंड इज इक्वल टू 1, सी हियर वेरी इंटरेस्टिंग, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखो इज इक्वल टू 1 फॉर 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 से 2 इज इक्वल टू 1, ये डेफिनेशन मिल गया, और बाकी जगह पे क्या हो गया 0 0 एल्स, मतलब इसमें 1 इसमें 1 बाकी 0 एल्स, अदर जितना भी पोर्शन रहा दिस साइड दिस साइड दिस साइड, इस सब में वैल्यू कितना हो गया 0, समझ में आ रहा है। सो लुकिंग टू द राइट हैंड साइड, लुकिंग टू द राइट हैंड साइड, ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन, इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर, अंडरस्टूड, ओके थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, दूसरे डिस्कशन पर फोकस करेंगे।